Give reasons or explain. Old age pension is transfer income. Old age pension is received by individuals without contributing to current year's production of goods and services. आप सर्विसेज पहले दे चुके, उसकी ओल्ड एज पेंशन इस साल मिली, जब आप रिटायर हो गए तो पेंशन जब मिल रही है उस समय कोई नए गुड्स और सर्विसेज जनरेट नहीं हो रहे, देयरफॉर इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इट इज अ transfer income. Old age pension is received after retirement. Old age pension is transferred by government to individual without contributing to current year's production. So old age pension is transfer income but to be included in national income. But sorry, not to be included in national income because old age pension क्या है, याद रखना है, इवन फॉर ऑब्जेक्टिव इट इज ट्रांसफर इनकम. नेशनल इनकम में इंक्लूड करोगे नहीं, बिकॉज इट इज ट्रांसफर इनकम एंड ये रिसीव हुई है बाय एन इंडिविजुअल विदाउट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू करंट ईयर्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज.